So these are the global trend which is happening today nowadays: digitalization, globalization, urbanization, climate change. Let's see one by one. You know that right now, people population is increasing, and by 2050, after 30 years only, the population of the whole world will be around 9.7 billion, and the source is United Nations. And do you know that what will be that challenge? The challenge is that 68% of the world population projected to be, they will be living in urban areas. They will not be living in rural areas. They will not be living in mountains. They will not be living in forest or uh, 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 less populated areas. They will be living in urban areas, in cities. So if you have to accommodate this much big population, big numbers in cities, then you have to plan it now. You have to plan it today. And being engineer, you should have something in your mind. What are you going to do with such a large number of people at that time? Another big challenge is that most of us are spending most of our time in the building. We are living in the house. We are working in the office. We are going to universities and we are studying. But all these things are happening in the indoor. And even if you are going for a factory for some production job, it is happening inside. Even if we are going for construction, it is happening inside. So most of the time which we are spending, 90% of the times which we are spending, 90% of people are spending time in inside. So we have to take care of buildings. We have to take care of our house, our universities. Another big challenge which is which we can see today for tomorrow is what? It is challenge of energy, because the biggest criteria for any building to be a successful, that the energy should be smooth. It should not be having any surge and hikes, and plus it should be continuous. Otherwise, the life is not comfortable there. So in this case, the European Union strives to make European people the first climate neutral continent by 2050. So of course, if this is happening, like for example, I will give you one example. If we are spending time in the building, we are spending time in the house or in the office or in the university, of course, with the change of weather, when the winter is there, we have to turn on the air conditioner. And what is happening? The air conditioner is turning the temperature down in the building. But what happened is that, on the cost of this change in inside the room, it is throwing out hot air outside. So your outside air, your outside environment is becoming more and more worse, and it is very difficult to sustain wildlife and pet life outside. This is also a big challenge. So you can see on this map what is happening, and these are also current mega trend. By 2050, 82 years life expectancy will be there. Because why? Because now most of the people are having, in most of the countries, especially in European countries, the health conditions are much more better as compared to previous years. Most of the disease has already been recognized, and they have found the remedies and treatment for them. Population will be increased, and 70% of the population will be living in the cities, and there will be 37 mega cities worldwide, and there will be transformation also. Okay, zettabyte is actually, a multiple of bytes. Byte was a basic unit, but nowadays, after kilobyte and megabytes and gigabytes, now we are counting the byte data into zettabytes. And zettabyte mean what? In one zettabyte there are 21 zeros, so 10 raised to the power 21. So you can well understand that how much data will be there for transfer from one device to other, from one system to other, from one building to another. And on top of this, there will be climate change also. Highest CO2 concentration will be in 2050, and it will be very high. So if this is trends going on around us, so what are the technological exponential growth going up there? As I told you just now, zettabyte, because the data is such a large number of volume that you cannot just ignore this one. And because you have to live by the data, you have to manage the data. If you are managing the data properly, transformation and transport and
upload and download and all these things, then you will be able to handle so many applications also, which I'm going to discuss in later slides. Another trend which is also happening here is non-oil economy. Before, everything was dependent on oil, and even all transport system, your cars and motorcycle, bus, and even your aeroplanes were using oil. But as you know that nowadays the transformation stage is there, and every large organization, even not oil producing organization, they are working on non-oil economy, non-oil resources also. That's why you can see that nowadays electric cars are getting very much popular, and after very few months only, you will see that most of the transport available on the road will be only electric transport. Even the bus will be transport, electric buses will be there, electric cars will be there, electric motorcycles are also there. These are less in number, but with the passage of time, you will see and you will realize that the quantity will keep on increasing. It will not stop. And why it will not stop? Because this will become very cheap also. As you know that there is very basic criteria, basic philosophy, basic theory is that supply and demand. When supply is more and demand is less, the price will go down automatically. Right now, electric cars are expensive. If you can compare that, electric cars are more expensive as compared to your ordinary mechanical car, petrol-driven car. But on the other hand, once the quantity is high number in the market, availability is more, then the price will go down. Similarly, there are some other restrictions here. There are some drawbacks in electrical cars right now, which is the biggest one is charging time. Charging time is very high, and even then you can travel maybe 100 kilometer, 200 kilometer, or maximum 300 kilometer. But on this area, huge research and development work is going on in so many organizations, and you will see very soon that this will also be overcome, and there will be quick charging available in maximum 5 minute time. The car will be charged, and it can go even more distances, and it can have more pickup time. And on top of this, of course, it will be 100% carbon free. There will be no emission in the air. So this is also going to happen very soon. As I told you, renewable resources are very much popular, getting popular these days, and the same will be, of course, in our future cities also. What is renewable resources of electricity, of energy? Right now, we are making energy with oil, but eventually, you will see that people are turning into solar energy, wind energy, and there are so many other renewable resources also which are available and which people are working on now. Uh, there is, huge growth in the quantum computing also. Our computing system, our computers are becoming more and more smart, and these are having much more higher speed of computing as compared to yesterday and some years back. This is also a line where we should think and where we can see that there is lots of potential, and which will help us also in future cities also. Smart devices are also, you can see that they have high trend of innovation, and there before few years before, your mobile phone was not a smartphone, and you were using this only for calling purpose. But now you are using your mobile phone for so many different things also. You can say you can use this one mobile phone maybe for 10 different applications, 10 different things. uh, and similarly, now there are other devices also which are turning into smart devices. Even your TVs are becoming smart TVs, and even now you can say that refrigerators are also becoming smart refrigerators. I'll show you in the later slide also how these are working. But all these things will play a role in future cities. Another thing which is also very important is GPS and tracking. GPS system is getting more and more powerful, more and more accurate, and more available, freely available to everyone. And people are using GPS, and with the help of this GPS, tracking is also very much possible, not only for person but also for assets also, for your car, for your motorcycle, for your even machinery, your furniture, your books, everything you can track with the help of GPS tracking system. And automobile transformation, as I told you already, that
Electric cars are getting more and more popular. Similarly, in auto industry, everything is turning out of oil, and they are going into electrical direction. And what else? On top of this, everything is are now on cloud. इनिशियली क्या था कि पहले जो है ना वो सारे के सारे आपका जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ करते थे. आपका जो भी कोई कंप्यूटर है उसके अंदर ही डेटा हुआ करता था, उसके अंदर ही हार्ड डिस्क हुआ करती थी. फिर सेकंड स्टेज जो आई, जो सेकंड जनरेशन आई, तो उसमें आपने देखा कि एक सर्वर बना दिया जाता था, एंड देन दिस सर्वर वाज टॉकिंग टू अदर कंप्यूटर्स, एंड these computers were in a network, and this network was on in the form of some hard cables. LAN, you were saying, you can say it LAN cable, local area network. So this was, a very successful time at that time. But nowadays, of course, this land is nothing, because now the business has been increasing a lot. It is not only for one building; it is multiple building within one city, and this is multiple cities also, and it is increasing to multiple countries also. Say, for example, one organization have a business and they have offices in different countries and different cities. So this model will never work. So for this purpose, of course, a requirement was there, and to overcome this requirement, the only solution was that you make this data uncentralized, decentralized also, and manageable from other locations also. For this purpose, with the passage of time, nowadays cloud management is the only solution available, with the help of which everything is, you are talking in the cloud. Different organization, different data centers are talking in the clouds, and cloud is distributing this data to everywhere. ये अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसके समय और ज्यादा बेहतर समय लग जाएगी, लेकिन यहाँ से आपको समय लगेगी. What are the requirement of future cities? Of course, you need to have traffic management in smart city, in future cities. You need to have security, video analytics also there. आपकी home monitoring वहाँ पे होना बहुत जरूरी है. Residential, commercial, water metering होनी चाहिए. Your cities should be safe in terms of security, like for example, CCTV system or access control system or intrusion alarm system, etc. There will be metering also for electrical metering and solar gas metering. Mass notification system should be there. If something happen in any one of these, the message should go to all people. Everyone should be notified. So लेकिन क्या है अगर देखें कमर्शियल, ये इतनी भी चीजें हैं आपकी, सब देख रहे हैं कि ये सब के सब किससे बात कर रही हैं. They are in a cloud. So in a cloud, they are talking to each other, and from any one application, you can talk to other application also. But it will be independent, and yet these are integratable also. Today is a special day. You were born. 30 years from now, you'll be an adult. What will life be like in 2050? Let's paint a picture together. You will probably live in a city, like most people during this time. A city so smart that it feels like it was built all around you. In fact, everyone is an integral part of the city. People don't only use up electricity, they also produce it to meet the city's needs. Your city will be able to adapt to all kinds of things, to your needs, to traffic flow, to the weather, all with the help of digitalization. Energy is valuable in your city. The technologies at the grid edge will make sure of that. But it's not only your city that is energy efficient and adaptable. Buildings using up 40% of our global electricity will become a thing of the past. As interconnected as your city is, almost every building will have its own small power grid. You will move through this city seamlessly, effortlessly, emission-free. And that's what your workplace will look like too, providing the ideal conditions to do your best work, whether you're at the office or working remotely. Even today, technology is the backbone of change, remarkably accelerated by the pandemic, and it will be all the more tomorrow. Shaping future cities and ecosystems means shaping your very own future. We see new technology and new business opportunities, but above all, we see you. We create the outlines today, so we can color them with your brightest crayons tomorrow. Of course, there should be data.
डाटा के बगैर तो ये कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन फ्यूचर सिटीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो डाटा है, पीपल हैं, एंड टेक्नोलॉजीज हैं। और इट हैज़ टू बी स्मार्ट, इट हैज़ टू बी रिजिलियंट। मीन इनके अगर आपको कोई आपका सिस्टम ही हैक कर रहे थे तो फिर आपका फायदा कोई नहीं है फ्यूचर सिटी का। इस मीन कि आपको नुकसान हो जाएगा वहाँ पे। You should have some system there available which will be resilient, which will make it resilient for the hackers. And of course, it should be sustainable. It should not be for 1 month only. It should be for lifelong. Same thing here. आपका data जो है वो होगा वो that should be open data. You should be using smart retail system. Smart retail system में क्या होगा कि आप शॉपिंग करने भी गए हैं तो say for example they are giving you one card or one number against your identity. So whenever you are using that card, so it will go from the history and it will tell you okay आपकी तो ये चीजें पसंद की हैं और आप वीक में इतनी ये चीजें इतना लेते हैं तो आप वो दोबारा आपको खुद से सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। so it will do the things for you. This is called smart retail. Smart homes will be there, smart agriculture will be there, smart education should be there, smart grid and smart energy will be there, smart government should be there. गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी काम हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। इट शुड बी डिजिटलाइज। इट शुड नॉट बी कि आप किसी लाइन में खड़े हुए हैं, किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, वहाँ किसी लोगों से बात कर रहे हैं, आप फिर वहाँ पर कोई वाक्य ढूंढ रहे हैं कि आप प्लीज मेरा काम कर दें। इट शुड बी ऑटोमेटिकली हैसल फ्री थिंग्स। सिमिलरली हेल्थ भी जो है वो आपकी स्मार्ट हेल्थ होनी चाहिए। और इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? IoT, Internet of Things. This is Internet of Things. You can see that your shopping is there, your mobile phone is there, and this is talking to some cloud, some data which is distributed among so many different applications. Even it is talking to everyone. और तभी आप इससे फायदा ले सकते हैं, अदरवाइज इसका आपको फायदा कोई नहीं होगा। लेकिन यही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि एनी टाइम एनी कॉन्टेक्स्ट यू कैन एक्सेस anything, any device you can reach to, anyone and anybody you can contact, or any service and in any business, it has to be approachable, or any path and any network. क्योंकि जैसे फर्ज किया अगर आप देखें तो इंटरनेट प्रोवाइडर आपके जो है हर कंट्री में डिफरेंट है। मैं अगर सऊदी अरेबिया में हूँ तो यहाँ पे STC है, मोबाइली है, जैन है, या कुछ और भी हैं। तो इसी तरह हो सकता है पाकिस्तान में भी कुछ और भी हों। तो इट डजंट मीन कि अगर आप किसी एक पाथ पे हैं तो आपको दूसरे पाथ में जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो देन यू कैनॉट गो फॉर स्मार्ट सिटीज, यू कैनॉट गो फॉर स्मार्ट बिल्डिंग, यू कैनॉट गो फॉर फ्यूचर सिटीज आल्सो। एंड ऑफ कोर्स ऑन टॉप ऑफ दिस इट शुड बी एनी प्लेस एनीवेयर आल्सो। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अब चाहूंगा ये कि आप इस पर थोड़ा सा इसको जरा कॉन्सेंट्रेट करें कि इस फ्यूचर सिटीज में हर शख्स का रोल होगा। देयर विल बी ऑनर्स ऑफ कोर्स, ऑनर ऑफ व्हाट, ऑनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑनर ऑफ बिजनेसेस, ऑनर ऑफ बिल्डिंग्स, ऑनर ऑफ हाउसेज। बिकॉज सिटी में क्या चीजें हैं, सिटी में ये सब चीजें हैं ना। देयर आर इंडस्ट्री इज देयर, वहाँ पे आपको बिल्डिंग मिलेंगी, वहाँ पे आपको रिटेल मॉल मिलेंगे, स्मॉल शॉप मिलेंगी, हॉस्पिटल मिलेंगे, एजुकेशन मिलेगी। तो जो जो भी ओनर्स हैं दे विल हैव टू प्ले रोल देयर। They will have to make their data available to talk to other organization and other operators also. Otherwise, of course, they will be isolated within that community. And there should be some operators जो कि उनको उन बिल्डिंग को ऑपरेट कर रहे हैं और जो कि उनको दे रहे हैं दूसरे टेनेंट्स को। इसी तरह कमर्शियल टेनेंट्स हैं जो कि उन बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं। डेवलपर्स हैं, इन डेवलपर्स में जाहिर बात है कौन लोग आएंगे? इन डेवलपर्स में होंगे फाइनेंसर जो कि उन 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 हॉस्पिटल को बना रहे हैं, उन एजुकेशन सेंटर्स को बना रहे हैं, या उन यूनिवर्सिटीज को बना रहे हैं। देयर विल बी आर्किटेक्ट एंड प्लानर्स, इंजीनियर्स। तो इस आर्किटेक्ट प्लानर्स में हर तरह के लोग बीच में आ जाएंगे। इस तरह इंस्टॉलर सर्विसेज कंपनीज में कौन लोग होंगे? इसमें हर तरह के इंजीनियर बीच में आ जाएंगे। तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड दैट इन फ्यूचर सिटीज देयर विल बी रोल फॉर एवरीवन। No one will be left behind, or no one will be left unattended there. They will have to play their role. So today you have to think on this one, that what roles you can play in the future cities. How it will work, let's see it here. You can say कि आपके पास architecture planners हैं, आपके पास tenants हैं, owners हैं, ये सब के सब क्लाउड बेसिस पे एक दूसरे के साथ
डाटा शेयरिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सिस्टम शेयर कर रहे हैं, जो है वो अलार्म शेयर कर रहे हैं, कमांड एंड कंट्रोल शेयर कर रहे हैं. For this purpose, there should be some software also. It will not be only one data, cloud data. It should be some software. Siemens has one software which is called MindSphere, but otherwise there are some other software also available. Some other different organizations have their own software. So, but again, this master software will be talking to each other also. It doesn't mean that agar one organization is using one master software, the so it will not be talking to other software. No, it will be talking to other manufactured software also. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस हैं, बेशक वो मोबाइल फोन है या लैपटॉप है या आपका whatever you are using, then it will be talking through these devices to different people here. And on below you can see that all these role play people are here, devices are there, some software is there, and below is what? Below is some buildings, some industries, some grid, some energy generation system, and then some mobility also there. So these are connecting uh, in the future cities. And what will be the technology there, and how should be the solution there? इसमें चंद चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, but it can be more, it can be less. This you have to understand from here, and this you can make your own also. You will have, of course, your own requirement. It is not a must that you have to follow only this list. Maybe there are so many other things which are not mentioned here, but you can find it with your own requirement. And then again, but the basic thing is that go for basics and then make your data uh, you know transparent and transportable and talkable to other, and then you're done. Then will be in future city also there. यही चीज यहाँ पे कम नजर आ रही है आपको. अगर आपने देखा है कि हमारे पास किस तरह की चीजें होंगी फ्यूचर सिटी में. ऑफ कोर्स विल बी हैविंग some energy centers, energy generation centers from where energy is generating, and it is going to different people, different industry, and different buildings also. So these are three parameters. अब किसी जगह से energy produce हो रही है, और then it is going to other also. But before I go further, let me tell you, अब जो पहले एक मूवी में आपने देखा भी था कि फ्यूचर सिटीज में ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कोई एक ही एनर्जी जनरेशन सेंटर हो, क्योंकि अगर ऐसा हो और सम हो इसमें कुछ मसला हो गया तो फिर क्या करेंगे. देन योर सिस्टम विल नॉट वर्क एनी मोर. So for this purpose, in the coming slide again, you will see that every community, like for example, there is one community, they can make their own microgrid also there, and they will be generating their own electricity, and then they are talking to main electricity grid also. The same thing I will show in the next slide. इधर देखिए जरा, एनर्जी सप्लाई साइड है आपकी, जहाँ पे आपके पास स्मार्ट ग्रिड्स हैं. आपके पास एनर्जी डिमांड साइड है, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज हैं और बिल्डिंग्स हैं. यही दो चीजें हैं किसी भी सिटी में. तो ये ग्रिड एज जो है ये आपका रोल प्ले करेगा कैसे. हियर यू कैन सी दैट ये वो जो फैक्टर हैं जहाँ पे किसी ना किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी बन रही है, बेशक वो विंड एनर्जी है, बेशक वो किसी और टाइप की एनर्जी, वो यहाँ से एनर्जी बन रही है और यहाँ से सप्लाई हो रही है इनको इंडस्ट्री में, जो है वो आपके हॉस्पिटल में और जो दूसरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में और आपके इवन एजुकेशन सेंटर वगैरह में सप्लाई हो रही है. तो हेयर थिंग इज कि यहाँ पे आप लोगों को जो जो छोटी जो कम्युनिटीज हैं, आपको यहाँ पे माइक्रो ग्रिड बनाना होगी. माइक्रो ग्रिड का मतलब क्या है कि आप अपनी एनर्जी भी प्रोड्यूस करें, एंड देन यू सेल दिस टू द मेन एनर्जी आल्सो. आपको पता ही है आजकल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि आप सोलर सेल लगाएं, सोलर अपने इस पे घर की छत पे लगाएं, एंड इफ यू आर मेकिंग मोर एनर्जी देन यू कैन सेल दिस एनर्जी टू वापडा. एम आई राइट और रॉन्ग? एनी इनपुट फ्रॉम योर? जी. तो इसी तरह ये तो अभी आप एक लेवल पे देख रहे हैं ना कि अभी आप एक घर के हाथ पे सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि आपने घर पे अपने जो है वो सोलर सेल लगाए हैं, और आपने उसकी जगह जो अपने घर का जो ऑर्डिनरी मीटर है उसको चेंज करवा के उसको स्मार्ट मीटर में लगवाया. ऐसा ही है ना. You will have to apply in WAPDA that because I am going to install solar panel on my roof, so I need to have a smart meter on the top of my outside my house. तो होगा क्या कि वो स्मार्ट मीटर है, वो इट विल बी टू वे मीटर. जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी बन रही है, ज्यादा वाटेज बन रहे हैं, और देन यू कैन सेल दिस टू WAPDA. सिमिलरली फॉर एग्जांपल गर्मियों की दिनों में आपका दिल किया कि जो लेट्स गो
विद फैमिली टू मरी फॉर से फॉर एग्जांपल 1 वीक। अब एक महीने एक हफ्ते के लिए आप मरी चले गए हैं, नॉर्दर्न एरिया में चले गए हैं, कागान नारान चले गए हैं, तो लेकिन वो सोलर सेल तो आपके लगे हुए हैं छत पे। अभी तक तो ये सूरत हाल होगी ना कि वो सोलर पैनल लगे हुए हैं, वो बिजली बना रहे हैं, लेकिन वो बिजली ज़ाया जा रही है। लेकिन अगर आपने वो सिर्फ एक डिवाइस चेंज की, स्मार्ट मीटर को चेंज किया, मीटर से स्मार्ट मीटर में चेंज किया, तो वो जितनी बिजली बन रही है वो वापडा में जा रही है। जब वापस आएंगे आपने वो दोबारा जो है वो अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना शुरू की, आपने जो है वो रेफ्रिजरेटर यूज़ करना शुरू किया, आपने जो है वो एयर कंडीशनर यूज़ करना शुरू किया, अब आपकी डिमांड ज़्यादा है। Now you're using more energy, more electricity. So at the end of the month, it will make the calculation and to tell you, okay, you are in positive side or you are in negative side, or you have to pay more. So this is called smart energy management. So there will be smart grids. तो अभी तो ये सिर्फ एक घर की हद तक है, लेकिन इन फ्यूचर सिटीज, इन स्मार्ट सिटीज, व्हाट विल हैपन कि एवरी कम्युनिटी शुड मेक देयर ओन सिस्टम विच इज कॉल्ड माइक्रो ग्रिड। तो माइक्रो ग्रिड के जरिए उस इलाके की जो है बिजली प्रोड्यूस होनी चाहिए, और फिर जो ही अगर वो उनकी डिमांड से ज्यादा अगर किसी तरह से बिजली प्रोड्यूस हो रही है, तो देन इट शुड बी गोइंग इनटू दिस पूल, एंड फ्रॉम हियर इट विल बी गोइंग टू दोज एरियाज जहाँ पे डिमांड ज्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में तो एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हर वक्त रहेगी ना, तो हो सकता है छोटी कम्युनिटी से आपके पास वो एनर्जी जा रही है और वहां से होती हुई इंडस्ट्री में आ रही है। So this will how it will make impact in smart cities, in future cities, and here you will see the benefit of smart grid. तो इसके लिए जाहिर बात है आपके पास जो है ना वो स्मार्ट ग्रिड अगर आपके पास है तो आपके पास स्मार्ट बिल्डिंग भी होनी चाहिए। स्मार्ट बिल्डिंग में क्या कुछ हो सकता है? एनी आइडिया? यू हैव टाइम स्पेंडिंग टाइम इन द बिल्डिंग, कोई आप में से बताना पसंद करेगा कि स्मार्ट बिल्डिंग किस तरह की होनी चाहिए? तो of course smart building will play a very vital role in a smart city or future city. So let's see smart building में क्या कुछ हो सकता है। We spend 90% of our lives in buildings. Shouldn't they be perfect places to live, learn, heal, grow, or innovate? Buildings can be smart, like driverless cars, planes that fly themselves, or our smartphones that control home lighting, heating, and security systems. But will a building continually run analytics to detect equipment failures before they happen, or anticipate security needs based on trends and predictive movements of its occupants, or create smart spaces where shades adjust when the sun is shining directly in the windows? Today, buildings produce thousands upon thousands of data points each day, which literally creates a pool full of data. But in fact, the most important and useful data would fill only a cup. Just have to know which cup is most important. Tomorrow's buildings will be autonomous. They will always be learning, always be awake 24/7. Days, nights, holidays, and weekends. They will continuously adjust based on the current environment and requirements. And autonomous buildings will let your occupants focus on what they are passionate about. Just watch what your building might uncover using deep machine learning and artificial intelligence. Interesting. The power this fan is using seems a little high. We may be using electricity we don't need. Confirmed. The power consumption has been increasing steadily recently. Checking the environment. The supply temperature and static pressure are within acceptable range of set point. Fan output is at 76%. All appears to be normal. But the fan output is definitely higher than usual. Checking service records. 10 months ago, the fan belt was tightened. Here is the part number and life expectancy. I see it was last replaced 5.5 years ago, and have identified the runtime of the air handler. Based on this intelligence, the belt has exceeded the normal runtime, and is probably slipping. This is serious. The fan is in one of our most critical building spaces, and any downtime will cost us much more than the price of the belt. There is not a belt in our inventory. Ordering replacement. And I have notified our facility engineering department with all the necessary intelligence. As you can see, autonomous buildings learn, and the more they learn, the more autonomous they become, changing from strictly a cost to an asset.
This will allow building owners and their staff to spend less time and resources running buildings and more time on what's important, the occupants. Siemens can help you create the perfect place. Good night. Siemens. Ingenuity. जी आपने देखा कि इस छोटी सी वीडियो में उन्होंने क्या बताया कि एक आपका एक सिस्टम था जो कि एनालिटिकल सिस्टम था, उसने एनालाइज किया कि किसी एक खास जगह पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ हो रही है, हालांकि टेनेंट्स भी उतने ही हैं, और रीज़न उसकी क्या समझ लगी उनको कि उनके की एयर हैंडलिंग यूनिट का लोड भी उतना ही है, तो क्या वजह क्या है अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो इसका वजह उन्होंने निकाली कि उसके फ़ैन की जो बेल्ट जो है वो स्लिप कर रही है, और उसकी स्लिपेज की वजह से उसको ज़्यादा फैन को ज़्यादा चलना पड़ रहा है, और उस ज़्यादा फैन चलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ हो रही है। फिर वहीं से उन्होंने देखा कि फैन की बेल्ट अगर ज़्यादा चल रही है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, तो पता चला कि 5.5 ईयर बैक वो चेंज की गई थी, और अब तक उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी हुई है, या इट इज़ अबाउट टू फिनिश द लाइफ ऑफ फैन बेल्ट। तो उन्होंने वहां से उसका पार्ट नंबर भी निकाला और वहां से खुद से उसको ऑर्डर भी कर दिया। तो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट बिल्डिंग, बट अदरवाइज सिमिलरली इन वन बिल्डिंग देयर इज नॉट ओनली वन सिस्टम, देयर आर सो मेनी डिफरेंट सिस्टम देयर। किस तरह के सिस्टम होते हैं अगर आप देखें, जरा यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, आपको HVAC इक्विपमेंट है एक बिल्डिंग में, यहाँ पे आपको डिजिटल बिल्डिंग ट्विन है, वो एक तरह की दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है जो कि आपको सपोर्टिंग बिल्डिंग कहलाती है। वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग बैठे काम कर रहे हैं, बिल्डिंग ऑटोमेशन का काम हो रहा है जहाँ पे सब चीज़ें ऑटोमेटेड, लाइक BMS सिस्टम लगा हुआ है, सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पे है, थर्ड पार्टी सिस्टम वहाँ पे इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, वहाँ पे फायर सेफ्टी सिस्टम है, और इसी तरह पे बिल्डिंग सर्विसेज और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग वगैरह सब कुछ चीज़ें वहाँ पे हैं जो कि एक टिपिकल बिल्डिंग में आपको नजर आते हैं। लेकिन ये सब कुछ आप देख रहे हैं कि किसी एक खास जगह से कनेक्टेड हैं, दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, and that's why these are talking to each other and these are helping to each other. Same thing here, in one building you will have fire protection, you will have lighting system, you have safety technology, you have building management system, electric power distribution, and HVAC control system. And these are some, of course you can have much more than this one also. You can have even audio visual system, you can have so many other systems there also, but all these systems are talking to each other somehow. लेकिन इन सबको इस तरह करने के लिए आपके पास ये जो स्टेप हैं, आपको ये स्टेप पूरे करना पड़ेंगे। आपको इसको प्लानिंग में लेके आना पड़ेगा, इसको डिजाइन में लेके आना पड़ेगा, इसको प्रोजेक्ट डेटा में लेके आना पड़ेगा कि हाउ एक दूसरे के साथ ये चीजें एक दूसरे के साथ बात कर सकेंगी, और किस तरह से अपना डाटा ट्रांसफर कर सकेंगी, और किस तरह से डिसीजन लिए जाएंगे। बेशक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट ऑफ कोर्स देयर शुड बी सम डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म शुड बी देयर आल्सो। और यही जारी बात, इन तमाम रोल्स में इंजीनियर्स विल हैव टू प्ले रोल देयर। एक सिस्टम सब सिस्टम को हम देखते हैं वो किस तरह से काम कर रहा होगा। Like for example, a fire alarm system is there. There are so many devices which are connected to fire alarm system. Like for example, there is some smoke sensor, there is fire heat sensor, there are some sound beacons are there, and these are connected to a control panel, fire alarm control panel. लेकिन फायर अलार्म कंट्रोल पैनल तो यहाँ तक तो अगर इससे आगे काम नहीं चल रहा और ये डिस्कनेक्ट है किसी भी वजह से, और ये इसके बैक एंड पे इसकी कनेक्टिविटी नहीं है किसी कस्टमर नेटवर्क के साथ, किसी क्लाउड डाटा के साथ, तो इसका कोई फायदा नहीं। देन इट विल रिमेन स्टैंड अलोन सिस्टम एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ दिस। द ओनली थिंग हाउ यू कैन मेक इट suitable and usable and fruitful for other system and other subsystem and other tenants and other building is only way is that you have to make it communicatable to some network, any network, because all networks are talking to each other. तो यहाँ पे आपके पास कस्टमर नेटवर्क है, कस्टमर नेटवर्क में जो है ना आपके पास मोबाइल फोन एप्लीकेशन भी हैं, अब सब चीज़ें आ रही हैं, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें अब आपको कुछ नए सिरे से कुछ काम करना है। एवरीथिंग इज देयर, यू हैव टू जस्ट study the protocols of any one particular device, and then you will see how it can be communicatable to other devices and other network and systems also. Same thing here, अगर आप यहाँ देखें यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम लगाए गए हैं, आप देखें यहाँ पे सेफ्टी का सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, HV सिस्टम है, पावर सिस्टम है, थर्ड पार्टी सिस्टम है, बट अगेन दीज आर टॉकिंग टू, एंड ये आप समझ रहे हैं कि ये एक बिल्डिंग की बात आप कर रहे हैं। अगर ये तमाम एक बिल्डिंग वाले इस एक माइंड स्फेयर के साथ बात कर रहे हैं, और ये माइंड स्फेयर जो है ना मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ बात कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये माइंड स्फेयर दूसरी बिल्डिंग के साथ बात कर रही है। तो दिस मीन के व्हाट विल हैपन के बिल्डिंग विल बी टॉकिंग टू ईच अदर इन स्मार्ट सिटीज, इन फ्यूचर सिटीज, building will be talking to each other,
and it is a must. If your building is not talking to another building, then this means it is standalone building, then it is not going to play any role in the future city. ये वही चीज है इसमें. एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा which is really very very important is what the word prosumer. इस लफ्ज को जरा देखिएगा. हमने आज तक जो लफ्ज पढ़े हैं वो हमने पढ़ा है कंज्यूमर. कंज्यूमर मीन जो कंज्यूम कर रहे हैं. जो आपने को मार्केट बनाई तो उसमें जो शख्स चीज़ें खरीदने के लिए आया दैट इज कंज्यूमर ऑफ योर प्रोडक्ट. अगर किसी साहब ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, इवन लाइक फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर है, तो it will have some consumer. All students are consumer of that university. Similarly, कोई भी चीज है उसके लिए consumer है. लेकिन prosumer mean कि they are producing and consuming both. You can see from the arrowhead here, it is two way. So they are consuming and they are producing it also. Everything, most of thing. Like for example, हमने बात की अभी इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसी तरह दूसरी चीजें भी ऐसी हैं जो कि आप ना सिर्फ प्रोड्यूस भी करेंगे और आप कंज्यूम भी करेंगे. सो दिस इज हाउ फ्यूचर सिटी विल शुड वर्क. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. इसके मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. अभी पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिक कार तो वो चलना भी बहुत कम है, वेरी वेरी लो इन नंबर. लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, लाइक फॉर एग्जांपल इन यूरोप में और अमेरिका में, इलेक्ट्रिक कार्स आर बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर. अब उसके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? उसका चार्जिंग है. उसका चार्जिंग स्टेशन भी है, चार्जिंग टाइम भी है. अगर आप फर्ज के किसी जगह पे जा रहे हैं और रास्ते में आपकी जो है ना वो गाड़ी की चार्जिंग खत्म हो गई है, तो आप क्या करेंगे? आपको ढूंढना पड़ेगा. जिस तरह अभी भी सूरत हाल है, अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपको पेट्रोल स्टेशन ढूंढना पड़ता है. तो वहां पे अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोस्ट ऑफ द हाउसेज ने अपने घर के बाहर जो है वो मीटर लगा दिए हैं और वो कनेक्शन लगा दिए हैं. आप उनके घर के बाहर अपनी गाड़ी लगाएं, रोकें और अपना प्लग से उसके अंदर लगा दें. आप जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उनके घर से लेंगे, उतना आप पे कर देंगे बाय क्रेडिट कार्ड. तो even if he is not at home, even if he is sleeping, he don't have to bother to come out or you have to take permission from him. So this means you are consumer of what? You are consumer of you are not only consuming but you are participating, you are producing it also. आखिरी चीज जो इस यूनिट में जो किसी भी स्मार्ट सिटी में, किसी फ्यूचर सिटी में है, वो क्या है? हमने देख लिया इंडस्ट्री को, हमने देख लिया ग्रिड को, हमने देख लिया बिल्डिंग्स को कि वो क्या रोल प्ले कर सकती हैं. लास्ट थिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सिटी इज व्हाट इज योर होम, योर ओन पर्सनल होम वेयर यू आर लिविंग. तो लेट्स सी के स्मार्ट सिटीज में, फ्यूचर सिटीज में होम किस तरह के होंगे. The modern home is a very different place to how it was even 50 years ago. By the turn of the 21st century, most homes had things that were once thought to be pure luxuries, like multiple televisions and refrigerators. But all of these devices had restrictions when compared to smart devices. They needed an actual human being to make them do things. The stage was set for the next evolution in home appliance convenience, being smart. The advent of the cloud would pave the way for a new concept in smart tech, the Internet of Things. Thanks to this tech, most modern home appliances and devices can connect with each other, effectively rendering human actuation a thing of the not-so-distant past. Amazingly, smart tech is actually nothing new. One of the first of its kind was the Echo 4 home automation device, built in the mid-1960s. While never commercially developed, it was able to compute shopping lists, control a home's ambient temperature, and even turn devices on and off. Today's smart home tech market really began to kick off at the turn of the millennium, and from 2014 onwards, the market has quite literally exploded. According to some sources, like Sidious Minds, smart tech is fast becoming all-pervasive. Take Wonderwall's reactive house management system that can single-handedly manage your home heating, lighting, and security in one place. Other notable examples include Airex's IoT air ventilation system that incorporates weather compensation to adapt to weather automatically. Companies like Heatworks are already producing smart mini dishwashers that can also cook food.
Live-In is another company that makes smart showers, letting you preset the temperature and play your favorite Spotify playlist. You can also buy smart fridges that will order groceries for you as and when you need them. According to market research on the topic, over 50% of younger generations already have some form of a smart device at home, with 23 to 34-year-olds being the most likely to own one. Of the products available, smart home security devices and smart thermostats and fans make up the bulk of the tech purchased. Smart lighting and smart CO detectors collectively come in a close second. The near future, it seems, is very healthy for the industry. But what might the future have in store for smart home tech? With the increased interconnectivity of devices, it is not inconceivable that your home will become your very own personal assistant in time. It might even arrange things for you without your knowledge, but in a good way. Imagine a day 10 years from now where your alarm clock goes off earlier than normal. It is not malfunctioning. It has simply rescheduled to give you time to prepare for an impending meeting at 10 a.m. today. At the same time, the shower is on and ready for your arrival, pre-warmed to the perfect temperature. Your breakfast is being prepared for you by your own Michelin star robo-chef, and your electric car is fully charged and ready to go. While away at work, your home is being cleaned by a series of cleaner bots, and your pet is being looked after in your absence. When you arrive home after a long day's work, your dinner is ready and served, and you have an unexpected delivery via drone. The package, as it turns out, has a new course of medicine for an impending illness your smart toilet detected after analyzing your effluent that morning. Your home in the future may know you better than you can ever know yourself. Scary, right? Such unfettered convenience may seem appealing on the surface, but should we happily embrace this kind of future? For all the benefits that smart tech injects into our lives, it is not without its potential pitfalls. Take security, for example. With more and more of your home connected to the internet, there is a very real potential for other people to hack into and seriously compromise your personal space, privacy, and data. While this is an ever-present problem today, hackers can hardly mess up your breakfast or record you in the shower. At least just yet. For this reason, cybersecurity will be critical to the future of smart home tech. Another issue could potentially be our overdependence on technology. With more of our devices handling basic life tasks, any power outage could cause havoc in a tech-reliant society. For both these reasons, it might be wise to not entirely depend on tech for all those boring and repetitive tasks in our lives. We are, to coin a phrase, becoming infantilized in more ways than one. For ill or good, there seems to be no stopping the rise of smart home tech. But the future is not yet written. जी, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप इस जो एक घंटे के सेशन में जो हमने देखा है, तो आप इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकेंगे अपने अराउंड यू? लाइक फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस में, किसी बिल्डिंग में, किसी अपने घर में स्मार्टनेस आप किस तरह लेके आ सकेंगे?